Okay, so today's target for us is the next topic, which is again significant for our project work, which we plan to do. Okay, now the next part of it is the data science methodology and analytic approach to the Capstone project. Now we understand what's a Capstone project, and we have also dealt with the design thinking methodology there. Okay. Now this is another methodology we are talking about. So how do they differ and what is the process involved in this and why I need this? So we talk about that today. Followed by maybe I need one more session because I don't think I'll be able to complete two of the sessions today. That is the basic evaluation techniques. Matrices basically. Right. Now there in class 10th, you have done the evaluation metrics of accuracy, F1 score. Remember precision, right? Yes, ma'am. So that is one part of it, one way of dealing with the classification models. And the other one is the regression models, which is new for us. And that uske matrices, metrics जो है, वो हम करेंगे. And questions can come in both the categories in the exam. Right? So that is one part which may be that if I'm able to finish it today, very good. If not, then we will have a small session. वो बहुत मुश्किल नहीं है. There are just 3 formulas to be done, and they are easy to understand and easy to grasp because they very well correlate to the concept we are talking about. Valuation. Okay, so that is a separately done part. And Harshita, for that, you one part will be requiring to do the other thing. जो हम ये लोग 10th में कर चुके हैं evaluation methods. उसके लिए I'll share the video एक बार देखो उसको, and then maybe we sit with you separately in order to solve the questions. थोड़ा सा time लगेगा. ठीक है? Okay. So let's start now. Like why data science methodology? So here in this particular session, we talk about the introduction, the steps, and where are we including this methodology into my development of the Capstone project and the evaluation techniques and the evaluation. So this last 2 parts I've kept in a separate ones. If I'm able to finish the first part today, then we'll move on. Okay. First thing, the difference. अब एक मॉडल हमने एक मेथोडोलॉजी हमने डिजाइन थिंकिंग में सीखा and this is the second one. Why two? And where are they actually differing? Now, I've tried to categorize it as much as possible, though the book doesn't talk about that. But I thought that this is important for you to know that why are we starting another one, right? Because then only you can justify it. So taking up the core points here, we say that design thinking का जो main focus था, that was human needs. So we would start from that empathy map. जहाँ पे we are seeing that what he's thinking also, what he's doing also. Everything is separate out and हम उसके shoes में plug in करते हैं, that we say ना. We go into his shoes and we try to see that what is the problem. What is the user situation, and I try to analyze it in all directions. Data science methodology is more statistical, more data oriented. यहाँ पे focus is on data. So by the term itself, by the name itself, you can make out design thinking. So it's mainly on the thinking part, if I put it like that in a simple manner. And data science के अंदर हम लोग data पे focus ज़्यादा करें. It's more of algorithmic rather than feelings. Okay. So that is the main point of difference here. So rest of the points you can easily make out. Like here we discussed that it is completely non-linear. And data science में दो sequential, but certain areas maybe you do an iterative thing within the stages itself. ठीक है, नहीं हुआ ये ठीक से दोबारा करता है within the stage. You don't leave the stage and come back generally, right? So generally sequential here, but that is majorly non-sequential, right? यहाँ पे because it's data, then we are starting dealing with the data, so we move on to the programming languages. There we are still major focus is on prototyping with the brainstorming. And the types of brainstorming also we have done yesterday, last class, right? So all this is something by which you can make out that there is a major difference in both the methodologies. Depends upon where do you want to use what. And you will find that design thinking ka certain portions like 5W1H wala jo, 5H1W wala jo thing hai, no, 5W1H. That is incorporated here.
इन द डेटा साइंस मेथड, लेकिन बिकॉज दैट इज रिक्वायर्ड। तुम चाहे डेटा को अंडरस्टैंड कर रहे हो चाहे फीलिंग को अंडरस्टैंड करो, वो चाहिए हमें एस्पेक्ट। सो मेजर थिंकिंग, मेजर चीजों में वी आर टेकिंग दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो, बट दिस इज मोर फोकस्ड ऑन द डेटा in every step, the data science method. Okay, so this way I can differentiate. Differentiation is not going to be asked in the paper, so don't worry about it. But you must be convinced on the fact that why am I doing another method? If I just take up a simple term from methodology, so it's a method for me, है ना? So why a different method? So that is what I wanted to clarify out here. Now, who gave this? It was given by John Rollins, a data scientist at IBM Analytics, and it mainly consists of 10 steps. And इसको दो stages में divide किया गया. So they have combined 2 steps into 1 stage, 2 steps into 1 stage. इसको हम लोग module भी बोल रहे हैं. So 5 modules में with 2 steps in every module. Basically, there are 10 steps. So if the kind of MCQ is asked, so it will be true for you when you say it's 10 steps. And modules, if they say, it will be 5. Okay. So from the name itself, you can make out the 2 steps. Like this is from problem to approach. So understanding the problem से which approach to analytical approach हम follow कर रहे हैं उसके बारे में. So 2 steps यहाँ पे आ गए. Requirement and collection. Understanding the requirement of the data and then collecting it also. So 2 steps यहाँ आ गए. Then comes here actually, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, in the specifications we say that we try to explore the data further on. So that comes under this understanding to preparation of the data. इसको उसमें से वो एक्स्ट्रा चीजें डिलीट करो, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए समझ में आ गया तो उसको उस तरीके से प्रिपेयर करो डेटा को कि तुम्हारे लिए वो डेटा बहुत ऐप्ट हो. Then of course designing the new model, evaluating it, installing it. These 2 steps come in the 4th module, modeling and evaluation. And then deployment and feedback is definitely understood. पहले आप उसको यूजर साइड पे डालोगे, यूजर उसको यूज करेगा, फिर उसका फीडबैक देगा. ऑन द बेसिस ऑफ फीडबैक यू आर गोइंग टू इम्प्रूव. ओके, सो प्रीटी अंडरस्टैंडेबल स्टेप्स, बट जो टर्म्स है जो वहां पे फोकस है चीजों पे विच वी हैव टू कंसीडर. So these are the 10 steps. Okay. Now, business understanding and analytical understanding is the first module. Data requirements and data collection is the second module. Data understanding, data preparation is the third module. Modeling and evaluation is the fourth module. And deployment and feedback is the fifth module. So you must say that I'm making 5 teams and every team is going to work on these 2 modules each. And as I said that it is not completely non-linear, but there are places where I might, after feedback, if I get something, some changes have to be made or there's something which is not appropriate, then I go back to the modeling stage and again do it. Okay. But it is, as such, majority of it is a straight cut process. So will not go back. Right? डेटा प्रिपरेशन में आपको फील हुआ कि नहीं ये डेटा इनकम्प्लीट लग रहा है, थोड़ा सा और होगा तो बेटर रहेगा, सो यू कम बैक एंड अगेन कलेक्ट सम मोर डेटा फॉर इट. अदरवाइज इफ इट गोस परफेक्ट इट इज अ स्ट्रेट कट प्रोसेस. इसमें आप वापस आओगे ही नहीं फॉर रिकंसिडरेशन. ओके. नाउ द फर्स्ट मॉडल, प्रॉब्लम टू अप्रोच. ओके. फर्स्ट थिंग ऑफ कोर्स फॉर एनी solution is understanding the problem. I discussed it in the design thinking methodology also. अगर problem ही आप गलत समझेंगे तो आपका solution कभी सही नहीं. और problem समझने का major portion है stakeholders, your environment, सब चीजों को आपको analyze करना है, देखना है और फिर actual problem को समझना है. और उसके लिए you have this 5W1H canvas to then put it in numbers, put it in sentences. ठीक है, कि ऐसे 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 है. We've understood the PW1H problem properly earlier also. Moving on to the next one is the analytical approach. Now ये चीज हम लोग डिजाइन थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे. यहाँ पे आप ट्राई टू गिव एग्जांपल टू अंडरस्टैंड कि एनालिटिकल मॉडल वो किसको बोल रहा है, क्या है एग्जैक्टली. बिकॉज आई एम सेइंग हियर द फोकस इज डेटा, दिस मेथोडोलॉजी इज डेटा ड्रिवन. सो एनालिटिकल अप्रोच में हम आपका प्रॉब्लम को उठा के एक एनालिटिकल क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी प्रोसीड
to the analysis accordingly. Guess it. What I'm trying to say is that, for example, my problem is that my customer churning is too high. Now, this churning is a new term even I have gone through in the data analytics. It is considered to be very, very important term. लेकिन इसका basic मतलब है कि my customer, I'm losing out on the customers. So my customers are leaving my company, and that churning out is too much, too high. Like, these things happen. Like Airtel and Reliance are two competitors. So suddenly some offer comes from Reliance Telecommunication. तो मैंने Airtel छोड़ा और Reliance ले ली. Times of India, Hindustan Times. They have that competition going on. है ना? So आप उस चीज को इस तरीके से देख रहे हैं. My customer, I'm losing out on the customers and it's very high. It's too fast. So what is the analytical question? अब इसको लेके इस क्वेश्चन को, इस स्टेटमेंट को लेके हम लोग किस क्वेश्चन पे कंक्लूड करते हैं? Can we predict which customers are most likely to churn in the next 3 months so that I can focus on those set of customers? Like some people are very dedicated. चाहे उनको आसपास तुम कुछ भी दे दो, they will still go for that particular brand. ठीक है? But there are chunk of people who keep on jumping and changing. जहाँ ऑफर अच्छा मिला वहां चेंज कर लिया, जहाँ पे ऑफर अच्छा मिला वहां चेंज. They really don't think about the quality at times. I'll give you one example which your parents can correlate when they go for grocery shopping. What an odd example, but anyway, it's very, very effective. Harpic is one brand which we use for our washroom cleaning. Maybe you people also have it. Now, उसके बहुत सारे options. If you go to a mart nowadays, they'll give you 10 options at least. कि मैम ये आया है, this is a new product and this is doing so well. etc. As a usual dumb customer, मैंने भी उसको change किया because the offer was very good. One entire 1 kilo bottle के साथ या 1 kilo bottle coming out free. So once I tried, it was horrible experience for me, and I am now back to my happy. And now, no matter whatever people say around me there in the shop, I'm like, no, I'm not going to change. Okay. So that is what. Can we predict which customers are most likely to churn in the next 3 months? Can you really figure it out? If you can figure it out, then you can work on them. Okay. And where it does lead towards my predictive analysis. We have done the types of analysis, predictive and diagnostic and descriptive. So this particular question को मैं lean down करके ले जा रही हूँ towards predictive analysis. So I will have my modeling techniques. I will have my other approaches based on this predictive analysis. Mainly हम लोग जो यहाँ पे problems को solve कर रहे हैं, we are talking about two analysis. We will be talking about two analysis only, descriptive और predictive. हमारा focus mainly उसी पे होगा. When you design your project also, you'll find that somewhere or the other your categorization will fall on these two, either descriptive or predictive. Okay. Rather, if I would give you an example, so you can understand also. हमने जो 10th में भी डेटा एनालिटिक्स करा, सिंपल सा किया था हमने कि जस्ट डेटा को लिया, उस पे हमने काम किया एंड देन वी ट्राई टू हैव द ग्राफ्स बनाए, राइट? सो व्हाट वाज दैट? आई वाज नॉट डूइंग एनी प्रेडिक्शन based on the data I collect. Whatever project you made, I really can't think of. You have better to judge that. But mainly क्या है? I was not doing any predictive analysis. I was just describing the data. Right? Through graphs, I was just describing. So I learned how to do that. But AI component में आने के बाद our main focus is prediction. So predictive analysis becomes more important. Right? So I am coming to this particular question here, and this is what my analytical approach is helping me do. कि उसको एक वैसे वाले format में. Like here, my next question is, my business problem is, we want to personalize recommendations for our users. That could be any damn brand or anything, any site or anything. That's it, right? Personalized recommendation, हमें जो समझ में आता है immediately, that is YouTube, right? But then you have it in every site of that kind, whether it is Pinterest, whether it is some other thing, or whether it is even if you are searching for some hotels in Make My Trip or something like that. So automatically वो personalized recommendations हो जाते हैं, right?
So इसका क्वेश्चन क्या है? What products are similar to the ones a user has interacted with, and what other products do similar users purchase? Right? So sounds a very long sentence, but इसको समझाने के लिए let me give you an example personally which I have experienced myself. I am searching for a product in Amazon. Let it be a set of shoes or maybe a kurta set or something like that. Now once I am like seeing it, when I export here, so I go to the details of that one which I choose. Now if you move down, what will show you that people brought two other things along with this. So they show you the combination. They'll show you maybe two other suits, which is similar to your taste, what you have taken now. और उसके साथ उन्होंने कोई शू भी लिया है और उसके साथ उन्होंने कोई पर्स भी लिया है या समथिंग भी लिया है. सो दे शो यू सिमिलर यूजर्स ने क्या परचेज की, जिसको ये पसंद आया उसने उसके साथ और क्या लिया था, तो द रिकमेंडेशन सिस्टम shows me that also, right, which happens in Amazon. Maybe it is happening in other sites also, but I'm telling you my own experience. That it tries to recommend you कि उसके साथ उसने ये जूलरी पहनिया खरीदा, that person, the other person, उसके साथ उन्होंने ये चीज भी लिया. So if you are attracted towards that particular thing, you may also explore those options. So it's like, you know, more of describing कि क्या previous purchases लोगों ने करे हैं, accordingly मैं तुमको suggestions दे रही हूँ, describe करूँ तुम्हारे purchase को, किसके साथ और क्या क्या तुम कर सकते, right? So this kind of a thing is happening in my analytical approach. First part. Second, what type of analytical problem? अब तुमने उसको analytical question में convert करके फिर उसका analytical categorize करा, जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो descriptive है, diagnostic है, predictive है या prescriptive है. Now इसमें what I'm saying again and again is we focus mainly on descriptive and predictive because हम लोगों ने mainly focus इसी पे किया है in the syllabus and it's easier for us to understand that. So descriptive में we have done in class 10th what? Visualization. So now you can correlate. हमने और कुछ नहीं किया था. Statistical summaries वाला portion मैंने नहीं कराया. To some extent हम इसको IP में 12th में कराते हैं. Right? Statistical summaries. कि पूरे डेटा में से मैंने उसका शेप निकाला, उसका सम निकाला, उसका पर्टिकुलर कॉलम का मीन निकाला, वेरिएंस निकाला. वी हैव स्टडीड दी स्टैटिस्टिकल समरीज. मीन वेरिएंस का हमने वो चीज डेटा आई डोंट स्टार्टेड लास्ट ईयर हमने करा. मीन, मीडियन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मोड, सब कुछ निकाला है ना. सो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमने पढ़ा है, विजुअलाइजेशन भी हमने पढ़ा है, मेजरली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं. And predictive also classification and regression we have done enough of that. तब उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. तो हमारे AI मॉडल्स जनरली इन्हीं दोनों पे फोकस करेंगे. एग्जाम्पल्स भी करेंगे आप लोग जो प्रोजेक्ट करते हैं. Of course, if you are able to work out on the other ones, very good. But our focus is mainly to teach you on these two grounds. Okay. Next part. The last thing what you do in analytical approach is again factors influencing the choice of approach and model type. तो उसको आप और डिटेल में जाके nature of the target variable, because your target variable is defined. Like if I'm giving you an example here, target variable, specifically what is a target variable? Because ये हम practically करेंगे, जब हम थ्रू कोड भी करेंगे, जब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम करेंगे और जब हम लोग उसको ऑरेंज डेटा एआई मॉडलिंग टूल के थ्रू करेंगे, नो कोड टूल के थ्रू करेंगे, वहां पे टारगेट वेरिएबल जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंड व्हाट इज माय टारगेट वेरिएबल? टारगेट वेरिएबल इज एक्चुअली कि हम किसका प्रिडिक्शन करें. आई हैव अ डेटा, सपोज इट इज अबाउट हाउस प्राइसेस. ठीक है, हाउस प्राइस का प्रिडिक्शन हम करें. सो माय टारगेट इज व्हाट? द प्राइस ऑफ द हाउस. दैट्स माय टारगेट, है ना. और इसके फैक्टर्स क्या क्या हो गए? नंबर ऑफ बेडरूम्स, एरिया वेयर द हाउस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट एसेट स्क्वायर फीट कितना है, एरिया ऑफ द हाउस. Then how many washrooms are there? Then what kind of internal work is done? Designing क्या कर रहा है? These are my factors. So ये सारा ही डेटा एक जगह पे होगा ना. जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे तो भी ये डेटा वही वाला डेटा यूज होगा. जब मैं उसको टेस्ट करूंगी तो भी वही वाला डेटा यूज होगा, है ना. तो इस पूरे डेटा में माई टारगेट वेरिएबल इज द प्राइस. रेस्ट आर ऑल द फैक्टर्स. ठीक है. Similarly, another example if I give you that
whether I'm talking about a diagnostic model where my machine is diagnosing whether a person has a chance of having a cancer or not. Right? We hear about these things in the news also. So मेरा target variable क्या है? It is simply a 0 or a 1 की chances of heart attack or cancer or something है या नहीं है. ठीक है? So factors उसमें बहुत सारे हैं. Body weight, उसका BMI जो body weight से निकल रहा है. Then you have cholesterol level, then you have fat level in the body, then you have something, बहुत सारी चीजें. These sections will tell me better. So बहुत सारे factors हैं जिसके बेसिस पे योर कंक्लूडिंग फैक्टर योर टारगेट वेरिएबल जिसको तुम टारगेट कर रहे हो निकालने के लिए दैट इज माई whether the person has a possibility of cancer or diabetes or something to be demand. So this can be a project work for you, right? So that is my target. I hope it's clear. Show me a thumbs up that you are able to understand what I'm talking about in the terms of target value. Hello. Show me a thumbs up. Whether you understand what a target variable is or not. Thanks, Akshita. What about Sri Ram and Sri Krishna? I'm waiting for your responses too. If not, you can definitely ask me again. Yes, ma'am, we understand. Okay, that's it. Okay. So मॉडल टाइप आपका उस तरीके से डिसाइड होगा कि वो कैटेगोरिकल है कंटिन्यूअस है. अगेन फर्दर ऑन वी व्हेन यू डू द एग्जांपल्स यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर. बट आवर फोकस इज ऑन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन. हम टाइम सीरीज या क्लस्टरिंग पे इतना काम नहीं. Majorly classification or regression. Okay. So that is all about my analytic approach. That what approach you will have. Now comes requirements to collection. The second model. Very well understood. Data requirements को study करो. यहाँ पे हम लोग अपना 5W1H से data requirements निकाल रहे हैं. Wherein we talk about the type of data you may use, structured, semi-structured, unstructured. ये भी हमने first term में पढ़ा है. First chapter में पढ़ा है. 11th में पढ़ा. Then format and structure of the thing. Source क्या है? Pre-processing पे हम लोग focus करते हैं. All that comes under your data requirements. इसके अंदर we have the next step now. डेटा कलेक्शन. कलेक्शन में मेनली आर फोकस है कि सोर्स कौन सा है. मेन फोकस मैं प्राइमरी सोर्स से डेटा को पिक करी. कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज हैं. सेकेंडरी सोर्सेज क्या है. कौन कौन से सेकेंडरी सोर्सेज. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस आल्सो अर्लियर बट आई जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन वन स्मॉल. प्राइमरी इज व्हेन यू आर डायरेक्टली गेटिंग द डेटा. आपने खुद जाके डेटा को ऑब्जर्व किसी इवेंट को ऑब्जर्व करा और उसमें से डेटा नोट डाउन करा. आपने यूजर से बात करी एंड आपने डेटा नोट डाउन करा. फर्स्ट हैंड कलेक्शन which is happening, interviews के through, surveys के through, experiments के through, where you're yourself present and you are collecting. That's we say a first-hand collection. Okay. Secondary is basically where data is already there on the websites, journals, databases में data पुराना आपने data उठाया पूरा का पूरा. 2 databases पकड़ा के उसमें आपको इस तरह ये है हमारा पिछले 20 साल का data. वो आपने उठा के उसको उसमें से निकाला whatever you want. Those are secondary sources, right? Next one, understanding to preparation. Understanding the suitability of the data. अब वो जो 20 साल का डेटा आपको दिया गया है from the secondary source, मे बी आपको करंट प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग नहीं चाहिए. मे बी आपको चाहिए. कितना चाहिए. आपने इंटरव्यूज भी करे, आपने सर्वेज भी करे, आपने करंट एक्सपेरिमेंटेशन भी देखा, उसमें से भी डेटा किया. तो कितना यू आर एक्चुअली वांटिंग. व्हाट आर द रेलेवेंस ऑफ दैट. Okay, so relevance, comprehensiveness, suitability of the data is being judged here. Okay, again the techniques are your descriptive analysis, statistics के लिए you have certain analysis, which again I'm saying that we are not going to focus upon them much. Visualization we definitely do. To have the summarization. पूरा data ऐसे textually पढ़ना बहुत मुश्किल है. Summaries do help. Statistical summaries है या Instagram your visualization tools है. They are definitely good to understand. Now comes preparing for the next. Now what? You understood the data, what is there because. Now preparing for further on work on it, right? जिसमें कि first आपने करा है cleaning of data. You yourself done that for the regression tool which we have done. Where we are talking about the invalid or missing value data को हटाओ, duplicate values से हटाओ, उसको suitable format में convert करो.
आई वांट द डेटा इन अ टैबुलर फॉर्मेट, तो उसको सीएसवी से उठाया, टैबुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, या टेक्सचुअल फॉर्मेट से टैबुलर फॉर्मेट, राइट, बिकॉज यू गेटिंग डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, तो अलग अलग फॉर्मेट्स में है, तो उसको अच्छे से उठा के एक जगह पर जिस तरीके से आपको फर्दर डील करना है उसके साथ, उसको अरेंज किया, कंबाइन करा और मीनिंगफुल इनपुट्स में कन्वर्ट करा कि मुझे ये चाहिए, राइट। यहाँ पे there's a concept it has been asked once in the CBSE paper also, feature engineering, a very interesting concept. What does it do? It takes the existing data और उससे कुछ new values निकालने की कोशिश करता है, जो existing data से आप निकालो। Supposedly आप कह रहे हो, बहुत simple सा example हम देंगे, you have salary, you have basic salary of the employees, you're working on something. अच्छा, हम लोग sorry, anyway, just example I'm saying salary data, हम लोग सैलरी में से हम लोग बहुत इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं कि इसमें से एचआरए कितना है, इसमें से डीए कितना निकलेगा, इसमें से ट्रैवल अलाउंस कितना निकलेगा, क्योंकि वो हर कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय का अलग अलग है परसेंटेज। सो वो आपने सारा डिराइव करा, वो आपके पास था नहीं, राइट, एंड because you needed it for some kind of a conclusion, some kind of an understanding of the data, so you did. इस प्रोसेस को फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं, which will help me improvise on the performance of the data, because मैंने रॉ डेटा से कुछ और डेटा क्रिएट किया, एग्जिस्टिंग डेटा से उससे मैंने कुछ और डेटा किया। उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आल्सो पुट किया, लाइक my target variable is to judge whether the student will pass a test on, like your data is there, हम लोग बोलते हैं ना, what is your predictive score, you people will come to us within a few months to say कि मैम predictive score भर दीजिए इस फॉर्म में, मुझे अप्लाई करना है ना। सो प्रेडिक्टिव स्कोर के लिए हम लोग जज करते हैं, सपोज हर्षिता को हम जजेंगे। अब क्या फीचर्स मैंने रॉ उठाए हैं, आज स्टडीड प्रीवियस टेस्ट को और उसका अटेंडेंस। शी टेल्स मी मैम आई स्टडी फॉर 10 hours a day, उसके प्रीवियस सारे टेस्ट के स्कोर्स आउट ऑफ 20 or 40 एंड हर अटेंडेंस फॉर द ईयर। आई हैव टेकन दीस थ्री inputs and I try to give a output which is whether she will pass the test or not, coming test. Okay, so that's my target plan. अब फीचर इंजीनियरिंग ने क्या किया, उसने हमने उसको बोला हम एक एफिशिएंसी फैक्टर निकालते हैं आर्शिका, राइट। उसके प्रीवियस टेस्ट, उसका जो प्रीवियस टेस्ट का स्कोर है उसके साथ वी कोरिलेट द आवर्स स्टडीड एंड वी टेक आउट द स्टडी एफिशिएंसी पैरामीटर। ओके, नाउ इट विल काइंड ऑफ रिवील किसी ने 10 घंटे पढ़ा और उसका जो आउटपुट आया हिस्ट्री द पर्सन गॉट 40 out of 80, और किसी ने 5 घंटे पढ़ा और उसका आउटपुट आया 40 out of 80, एफिशिएंसी फैक्टर कितना, हर बच्चे का हमने एफिशिएंसी फैक्टर निकाला, उसके अकॉर्डिंग यू नो दे गिव यू जजमेंट आल्सो, लाइक हम लोग जो कहते हैं ना कि आप उनके पास जाओ, काउंसलर्स के पास जाओ। Now counselors will do what? Counselor will try to maybe find out your study efficiency और अकॉर्डिंगली आपको वो जजमेंट देगा कि आई थिंक आप 10 घंटे पढ़ते रहे हो लेकिन योर आउटपुट इज नॉट एज पर द नीड, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, आई थिंक यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग एज मच इज रिक्वायर्ड, या तुम्हारा स्टडी पैटर्न ही गलत है, तुम जिस तरीके से पढ़ रहे हो, पहले तुम पढ़ते हो फिर तुम लिखते हो फिर तुम सॉल्व करते हो, और वाइस वर्सा वगैरह, या तुम पहले वीडियो देखते हो फिर तुम लिखते हो फिर तुम पढ़ते हो, राइट। तो आपका जो उस हिसाब से 10 घंटे के हिसाब से जो आउटपुट आना चाहिए वो एफिशिएंसी लेवल आना चाहिए वो नहीं आता, राइट। सो इस तरह का जजमेंट, हिडन पैटर्न्स यू कैन रिवील फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैक्टर विच यू हैव क्रिएटेड, क्योंकि आपके ओरिजिनल डेटा में नहीं था, बट यू हैव इंजीनियर्ड दैट पैटर्न, and if you correlate it to every situation you can do something like this. I took this example for that I thought that you will be able to correlate it. Like हम कभी कभी कहते हैं ना, ये बच्चा तो स्कूल में पूरा टाइम मस्ती करता है, एग्जाम में मार्क्स ले, and the other person वो पूरा sincerely पूरा everything, every class he is attending sincerely, everything is doing, but जब एग्जाम में लिखने बैठता है तो वो आउटपुट नहीं आता। You see these things, राइट। तो स्टडी एफिशिएंसी उसका निकाल के मैंने उस पर्टिकुलर चीज में से पैटर्न निकाला, एंड देन आई एम फर्दर वर्किंग ऑन दैट, because again I'm repeating the thing, my focus is to solve the problem,
अगर मैं अगेन प्रॉब्लम ही गलत डायग्नोस करूंगी तो मेरा सोल्यूशन कभी ठीक नहीं होगा। तो माई प्रॉब्लम हियर इज दैट उसका पैटर्न ऑफ स्टडी गलत था, जो कि मैं इस ओरिजिनल इनपुट से आर स्टडीड एंड प्रीवियस टेस्ट स्कोर और अटेंडेंस से नहीं निकाल सकती। Until unless I do something like this, I cannot come to a conclusion कि वो बच्चा 10 घंटे पढ़ तो रहा है, उसके दिमाग में कितना जा रहा है, या वो सही तरीके से पढ़ रहा है कि नहीं पढ़, है ना। अभी we had the IIT JEE score, the advanced JEE advanced scores we had, and इतने इंटरव्यूज आ रहे थे, इतना कुछ ज्यादा somebody was saying कि ये पूरा मैंने सेल्फ स्टडी किया है, and he's AIR rank 3 rank 10 or something, or there are people who are doing so much of coaching but ultimately उनका आउटपुट उतना नहीं आ पाता। What is the reason? है ना, तो वो भी तो एक निकालना जरूरी है ना। सो दैट दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज माय फीचर इंजीनियरिंग की एग्जिस्टिंग फीचर्स में से तुमने एक और फैक्टर ढूंढ के निकाला, विच इज वेरी वेरी। नेक्स्ट पार्ट, मॉडलिंग टू इवैल्यूएशन। अगेन डिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग, आई हैव बीन डिस्कसिंग कि आपका फोकस क्या है। आप समरी स्टैटिस्टिक्स निकाल रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो डेटा को मॉडल करने के लिए। प्रेडिक्टिव क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज हमने नहीं करा, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन भी अपना, जो स्टॉक प्राइसेस, हाउस प्राइसेस, इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं मॉडलिंग में। इवैल्यूएशन टेक्निक्स हम पढ़ेंगे, मेट्रिसेस निकालना मेनली। यहाँ पे भी आई एम टॉकिंग अबाउट इफ अ मॉडल इज प्रेडिक्टिव, then a decision tree. Decision tree again we have done in our class 10. So decision tree can be used to evaluate it. और अगर descriptive है, in that case, so certain testing test sets are there, जिसको हम लोग check out करते हैं, right? So evaluation पे मैं इतना focus यहाँ पे नहीं करें, because we need the metrics which is going to be more significant for you from exam point. So and for practical point of view, so आप metrics ही करोगे ना, evaluate करोगे, hypothetically तो नहीं कर सकते। Deployment to feedback is two simple things. I take the application to my user, give it to him, to check, and then ultimately I get the feedback. Based on the feedback, I kind of maybe make some changes in that, improvise on it, or work on it further. Okay, so these are the major steps of my design methodology, data science methodology, and this is the basic process which we are going to follow for our project. Okay, I'm sorry, yesterday I didn't share the document from the CBSE to that. I'll definitely do it. And I'm not going on further to the evaluation metrics. I will be doing that tomorrow. Okay, but this is something which is, may be very monotonic it sounds, but इसको थोड़ा सा अगर आप एनालिटिकली ही एनालाइज करोगे तो स्टेप्स याद रखने में दिक्कत नहीं है। ओके, सो do it in a manner that it's there on your tips, and description you can always write. If you have understood it well, you can describe it. और बहुत ज्यादा description की जरूरत नहीं होती है, because exam में you do not have 6 markers or 5 marks. The pattern is same as that of class 10. You'll have MCQs, majority out of 50, I think 24 marks is MCQs. Rest are your 2 markers, and ultimately you have some 3 marks. I think 4 questions, 3 marks. Sorry, 4 marks. It's 2 or 4. You don't have 3 markers. 4 marker में mainly you will have these kind of calculation based questions where you have to solve it. या कुछ हद तक steps भी definitely बहुत सारे यहाँ पे इस तरह के questions आ सकते हैं. But your main thing is that you understand the process properly in your own understanding language, and then you may produce it the way you know with the technical terms. Okay, I know it's too much, but then what we'll have more, right? So tomorrow I'll try to log in, and we'll have again a small session. I'll not take much time. And then most probably next week I may go for 1 or 2, not more than that. Because for the first term, whatever we have done till now for the July exam, the syllabus is this much. When we meet on Saturdays in July, which will hardly be 1 or 2 maybe, or sometime we get in school, I would like to revise and practice questions of that. I'm expecting some books or some material to be available by then, so that I can prepare those practice questions for you. And we will just practice. Revise करेंगे, practice करेंगे, और कुछ नहीं करेंगे. Then again we try to do it after the exams. Fine?
Okay. Anything you want to ask me, no problem. But my basic focus is